Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे हमें स्किंटिलेशन काउंटर विषय रे पढ़िबा देख ए स्किंटिलेशन काउंटर होची गोटे डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन बाय एक्साइटेशन ऑफ रेडिएशन ऑन द स्किंटिलेटिंग सब्सटेंस ओके प्रथम स्किंटिलेशन काउंटर को डिजाइन करथिले सैमुअल करन जे कि स्कॉटलैंड रो फिजिसिस्ट थिले while he was working on the Manhattan project at Berkeley in the year 1944 ता पूर्वरु एई डिवाइस को स्पिंथरिस्कोप बोली की कहा जाउतला which was devised by Rutherford while researching on the luminescence excited in zinc sulfide by alpha particles okay अच्छा एबे एई scintillation counter जदि हमें कंस्ट्रक्शन देखिबा बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 3 components गोटे हला scintillator which consists of a transparent material usually called as phosphor okay which was having a tendency to produce flashes of light when charged particle strikes on it okay so जेतेबेले चार्ज पार्टिकल या ऊपर स्ट्राइक करिवो एठू लाइट फ्लैश गुडा बाहरिवो ओके तापर सेकंड कंपोनेंट हला फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब या विषय डिटेल हमें नेक्स्ट आपको क्लास रे पढ़िबा सो बेसिक काम करे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब कोन ना ये कन्वर्ट करे लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सिग्नल और फोटॉन्स को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल रे कन्वर्ट करता है तापर थर्ड कंपोनेंट को देखो इट इज द एम्पलीफायर which is an electronic circuit that records and counts the electrical signal or pulses from the photomultiplier tube okay अच्छा एबे scintillation counter रो प्रिंसिपल जदि हमें देखिबा actually it is based on the principle that when nuclear radiation fall over a fluorescent substance suppose like your zinc sulfide then light flashes which are called scintillation okay a light flashes को हमें scintillation बोली की कहि थाउ these are produced which are detected using the photomultiplier tube so this is the principle of scintillation counter okay now let us see the block diagram as you can see here the block diagram of the scintillation counter is shown in the figure 4.8 so एठी देखो S हेगला the source of nuclear radiation which emits ionizing radiation to produce short duration flashes of light okay so देखो scintillating material और जोटा हमें डिस्कस करला phosphor बोली की it will produce tiny flash of light when charged particles will be passing through it okay so एठी as you can see incident radiation टा प्रथमे scintillator रे absorb हबो then the excited atoms of the material will decay in order to produce flashes of light or photons okay so ei photon guda jo emit heiki emane kono hebe transmit hebe to the cathode of this photomultiplier tube okay now the photoelectrons will be produced due to absorption of these light photons okay so এই इलेक्ट्रॉन रो मल्टीप्लिकेशन हेबा पई बहुत कम समय लागिवो अराउंड 10 टू द पावर -8 सेकेंड्स ओके एति की कम समय भितरे इलेक्ट्रॉन रो मल्टीप्लिकेशन हे जिवो ओके सो दैट ए लार्ज इलेक्ट्रिक पल्स of several tens of millivolt will be produced as the output okay so एठु हमर लाइट फ्लैश टा बाहरिबो तापरे एठी हमर इलेक्ट्रिक पल्स टा बाहरुची okay this is the pre amplifier and this is the
एम्पलीफायर एंड द काउंटिंग डिवाइस एट द एंड। ओके, अच्छा ये जो प्री एम्पलीफायर कौन करे, it will increase the strength of this signal। ओके, स्ट्रेंथ को सिग्नल स्ट्रेंथ को ये बढ़ेइब। आउ एई एम्पलीफाइड सिग्नल को आमे कौन करिबा, काउंटिंग डिवाइस को आमे जोगेइबा। ओके, सो it will function as to eliminate the low energy pulse। ओके, एई एम्पलीफायर बा काउंटिंग डिवाइस कौन करिबो, लो एनर्जी पल्स को एलिमिनेट करदेब, आ केवल जो हाई एनर्जी पल्स को इसे नब, एंड इट विल काउंट द रेडिएशन इन द स्केलर। तापर एठी देख लक्ष्य कर तले गुटे एच टी बा हाई टेंशन बैटरी लगी, सो दैट इलेक्ट्रिक पावर विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस हाई टेंशन बैटरी बाय स्टेबिलाइज्ड पावर सप्लाई। ओके, सो एटा हला यार बेसिक कंस्ट्रक्शन। पॉइंट वाइज एठी जहाँ लिखाई मु फिगर रे बतैली। अ पॉइंट, another point, important point here to remember, जे scintillation होची in general the word which refers to the process of giving of light। okay, so it is the process of giving of light as far as the word is concerned। अच्छा, एटा आउ गोटे बही रु मु नेइची। मेन पार्ट्स जदि आमे देखिबा scintillation counter रो, it consists of the scintillation chamber, photo multiplier tube एंड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर, जोटा आम ऊपर देखला। ये टे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को आउ टे बेसी डिटेल एक्सप्लेनेशन ये बही रे देइछि, सो मु एडिट करके एठी जोड़ीछि। ओके, सो एज यू कैन सी इन दिस फिगर, एटा आछि हमर scintillation चैम्बर व्हिच कंसिस्ट ऑफ एन एल्युमिनियम केसिंग, जहार भितरे आमे सुइटेबल scintillation क्रिस्टल को प्लेस करके रखीछु। ओके, सो यही एल्युमिनियम केस कौन कर, बाहर जिते सब अनावश्यक लाइट अच्छी ताकू ये प्रतिरोध कर। ओके, ताकू ये अटकेदेव। ओके, नाउ दिस scintillation chamber is fitted at the end of this photo multiplier tube। this one is the photo multiplier tube। यार गोटे मुंडरे आमे scintillation chamber को फिट कर रखीचु। ओके, अच्छा एबे हाई एनर्जी रेडिएशन को आमे इंसिडेंट करिबा। इट इज अलाउड टू इंसिडेंट ऑन द क्रिस्टल व्हिच प्रोड्यूसेस टिनी फ्लैश ऑफ लाइट और फोटॉन्स, जोटा ऊपर आमे डिस्कस कला सेही जिंस को आउटिके इठी डिटेल देखिछि। ओके, सो तमे जतले नोट करिवो, तमे एई हिसाब रे तम हिसाब रे लिखिवो। ओके, सो द फोटॉन्स फ्रॉम द scintillation chamber enter the photo multiplier tube। एई हिसाब रे ए जो फोटोन रो एटा होची सिंबल आमे जानिछु। ओके, so it will enter the photo multiplier tube and strike the photo cathode। okay, this is the photo cathode। now photo electrons ebe taro emission habo due to photoelectric emission। okay, photo multiplier tube now has several electrodes। okay, गुड़ाए संख्यक इलेक्ट्रोड्स या भितर थाए। ए इलेक्ट्रोड्स को आमे डायनोड्स बोली कि कहू। ओके, सो ए डायनोड्स एज यू कैन सी इन दिस फिगर D1 D2 D3। सो आ गोटे जिनस भी लक्ष्य कर, जमती आम D1 रु D2 D2 रु D3 एंड सो ऑन आकु बढ़िला, प्रोग्रेसिवली पोटेंशियल भी बढ़ी बढ़ी जाउची। 100 वोल्ट थिला D1 रे, D3 रे देखो 300 वोल्ट, D2 रे मे बी 200 वोल्ट एटा अछि। ओके, सो एई डायनोड्स को आमे स्पेशली प्रिपेयर करबा, जेमती कि यार सरफेस को आमे गोटे कोटिंग देइथिबा, लाइक योर सीजियम एंटीमनी हो पारे किंबा सिल्वर मैग्नेशियम रो कोटिंग आमे यार सरफेस रे देइथिबा। काहे कि बिकॉज एई कोटिंग देला माने यार सेकेंडरी एमिशन को ये बढ़े देबो। ओके, इन ऑर्डर टू अचीव हायर सेकेंडरी एमिशन आमे याकू गोटे स्पेशल कोटिंग देकी यार सरफेस टा को प्रिपेयर करबा। ओके, नाउ द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर एमिटेड फ्रॉम द फोटो कैथोड, ए जो फोटो कैथोड रु जो इलेक्ट्रॉन्स गुडा एमिट हेबे, it will be accelerated towards the first डायनोड एई पटे। ओके, D1 आड़ को माने एक्सिलरेट हेबे। तापरे जेतेबेले ए इलेक्ट्रॉन्स D1 को हिट करिवे, ताले सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ एक्सिलरेटेड टुवर्ड्स द सेकेंड डायनोड D2। ओके, सो D2 आड़ को माने गले। now from D2 the electrons are further multiplied by secondary emission and the process is repeated at each dynode, resulting in
a large multiplication of the electrons. Okay, so there are nearly 10 to 14 diodes in a photo multiplier tube. So finally I'm a highly amplified electric pulse पाइबा. As you can see in this figure, एठी सभा शेषरे आमे एनोड को रखीचु. So it will act as the collector of these electrons. Okay, so ये सब electrons को ये collect करिवो, and these pulses are now fed into the electronic system where they are actually counted. Okay, so the scintillation counter जदि आमे यार क्षमता देखिबा केते काउंट करि परिबा पाखापाखि 10 to the power 16 particles it can count per seconds. Okay, 10 to the power 16 particles per second it can count. Okay, अच्छा, so एठी देखो जहाँ जहाँ लिखा हितला फिगर रे मु बतैली. नाउ एबे ये जो आउटपुट आमे पाइबा वोल्टेज पल्स रो तार हाइट को आमे डिटरमाइन करि परिबा. देखो सपोज आमे एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट आयोनाइजिंग पार्टिकल को नला EI और EV हेगला mean energy of the photons which are emitted. अच्छा, eta हेगला efficiency of conversion. Then the number of photons which are produced in the phosphor by an ionizing particle, it is N1 equal to eta EI by EV, or eta equal to N1 EV by EI. Okay, now the number of photons which are falling on the photocathode of the photomultiplier tube, which is N2 equal to alpha T N1. एठी alpha हेगला fraction of total number of photons which are falling on the photocathode, और T हेगला optical transparency. Okay, so these photons are converted into photoelectrons having efficiency suppose eta E. Then we can write the number of photoelectrons which are produced by the cathode is capital N equal to eta E N2. Okay, now if capital D is the fraction of the photoelectrons which are reaching the first diode, then the number of photoelectrons reaching the first diode kete hobo? Obviously D into N. Okay, so if small m हेगला तमरा multiplication factor of each diode, and there are suppose small n number of diodes, then the number of electrons which are collected at the anode will be how much? Dn small m to the power n. Okay, so the charge carried to the anode will be equal to EI by EV eta alpha t, then eta E d m to the power n E. Okay, and the pulse height will be how much? Obviously charge divided voltage is how much? Charge by capacity. Okay, or capacitance. So एठी हमें C को केवल डिवाइड कर दीचु. Okay, where C is the capacitance of the system. So this shows that the height of the output pulse is proportional to the energy EI of the incident particle. Okay, अच्छा, এই scintillator properties केतेटा ଏବେ ଆମେ डिस्कस करिबा. देखो scintillator material जोटा यूज हुए in the counter, it must have the following properties. Number 1, it should have high conversion efficiency in order to convert the incident radiation into scintillation. Second point, it should remain transparent to its own light. Okay, it is this light which produces the photo emission. Okay, तापर थर्ड पॉइंट ये कहूँ इट शुड हैव सुइटेबल वैल्यू ऑफ योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. कहीं बिकज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हेबो नाही जमती. ओके, तापर फोर्थ पॉइंट रे द फॉस्फर व्हिच इज यूज्ड शुड हैव हाई रिजॉल्विंग पावर फॉर इंसिडेंट रेडिएशन. देन फिफ्थ पॉइंट, it should be stable and long lasting in order to withstand the prolonged exposure to the radiation. Now finally let us discuss the types of scintillators.
देख हाई एनर्जी पार्टिकल्स और photons जोटा अच्छी they can be detected by the following scintillators which are used in the scintillation counters. Number 1, the thallium activated sodium iodide. The pure sodium iodide jodi dekhiba, it has a forbidden energy gap of around 5.5 electron volt, okay, between the valence band and conduction band. acha ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରେଡିଏସନ୍ such as your gamma photon को आमे incident करूचु on a pure sodium iodide माने NaI, then the excited electron will now possess a higher probability of de-excitation by emitting photons of frequency in the range of UV or visible light. Therefore जदि आमे pure sodium iodide नेबा ताले ताकू यूज करिकी आमे भल भाबरे एफिशिएंट सिंटिलेशन पाई परिबा नाही. ओके तेणु आमे कोन करिबा किछि अल्प मात्रा रे impurity like your thallium ताकू आमे ऐड करिबा to this crystal so that it will now become a highly efficient scintillator. Okay, so the probability for the excited electron to de-excite, now it is directly proportional to the valence band of the sodium iodide, and it is very much less than the probability of its falling into the excited level of thallium impurity. Okay, so electron ebe excited level रे जो अछि thallium de-excited जो level गुड़ा अछि, so सेठू एबे ग्राउंड स्टेट को जो माने आसीबे so that they will emit the scintillation of visible light. तेणु करी efficiency हमर बढ़ी जिबा जेतेले हमें याकू thallium activated बा thallium impurity को अल्प मात्रा रे ऐड करिबा to the sodium iodide. तापरे एई scintillation को गोटे जिनस यार गोटे प्रॉब्लम होची गोटे ड्रॉबैक that it is hygroscopic and quite fragile. Okay, so due to this it quickly absorbs moisture from the surrounding when it is kept in open air. So open air रखी देले ये surrounding रो moisture को absorb करी निए. So ये moisture कौन करिवो in the crystal, it will make it opaque. Okay, जो transparent थिला ताकू ये opaque कर दबो and visible light जोटा emit होतला during the process will be now unable to pass through the crystal. So to overcome this आमे कौन करिबा crystal को प्रथमे polish करिबा in vacuum in order to remove any cracks. Okay, crystal रे थिबा crack बा जो दरार थाए किमा irregularity थाए ताकू आमे first दुरेबा. Okay, polish करिकी, and the polished crystal is then mounted and sealed in an aluminum container or aluminum case जोटा with reflecting or diffusing walls. Okay, second type है cesium iodide. So cesium iodide scintillator, it is not hygroscopic and hence it is preferred more often than your sodium iodide scintillators. Therefore the scintillators does not require any protection from the moisture. एठी आ moisture एते प्रभाव पके पारे नाही. ओके, तापरे थर्ड टाइप है जिंक सल्फाइड. देखो जिंक सल्फाइड होची गोटे इनऑर्गेनिक कंपाउंड which is used as scintillator for detection of heavy particles. Okay, so sodium iodide, then your cesium iodide, then zinc sulfide, these are some of the inorganic scintillators which are having much higher densities. Okay, so due to their high density or high effective atomic number, these scintillators can be used where high stopping power or high conversion efficiency for electrons or photons is required. Okay, so high efficiency ପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ यूज करि परिबा. एटा हला inorganic scintillators. सेही भलिया हमें organic scintillators ମଧ୍ୟ डिजाइन करि परिबा. So organic scintillators are aromatic hydrocarbon compounds, okay, which are containing the benzene rings which are interlinked in many ways. Okay,
सो देख ये ऑर्गेनिक सिंटिलेटर्स रे जो किछिटा यूजफुल scintillators अच्छी those are your anthracene, then your steel beam, then naphthalene. Okay, in order to count the gamma rays in presence of beta rays. Okay, तापर आसिला plastic scintillators. The plastic scintillators is a material in which the primary fluorescent emitter is called the floor, which is suspended in the base, and the energy of the excitation is transferred from solvent to the solute. Okay, so plastic scintillator रे कौन होगा, it will show the light output saturation when the energy density is large. Okay, तापर आसिला gaseous scintillators. It consists of nitrogen and noble gases such as your argon, helium, krypton, etc. Here the de-excitation is very quick, पाखापाखि 1 nanoseconds, माने 10 to the power minus 9 seconds. Okay, and the detector response is also quite fast. Okay, तापरे गोटे टाइप आछि एठी glass scintillator. Okay, so it is boron silicate which is most commonly used as the glass scintillator, and these detectors used for the detection of thermal neutrons, and they are used in nuclear fission reactions. Okay, so it has different types of scintillators. ଏବେ ଦେଖିବା किछिटा properties of scintillators. देख ऑलरेडी आम प्रॉपर्टीज ऑफ सिंटिलेटर्स विषय उपरे डिस्कस कला अल्प किछिटा पॉइंट एठी एटा आ गोटे बही पुणी नहीं सो दुई तीन बही एमती एडिट करी जेहेतु पेस्ट करी सो तुम जो तुम नोट लिख प्रॉपर्टीज ऑफ सिंटिलेटर्स को गोटे जगह लिख ओके सो एठी कहूँ देख फॉर अ गुड एफिशिएंट सिंटिलेटर it should have following properties. Number 1, high density in order to allow detection of rare events in particle physics. तापरे fast operation speed रहिबा दरकार for good resolution. Then low cost, कम दाम हेबा कथा, कम खर्चर. Then radiation hardness. तापरे good production capability. Then high efficiency रहिबा for converting the energy of incident radiation into the scintillation photons. Then for good light collection, the scintillators must show transparency to its own scintillating light. निजर scintillating light प्रति ये transparent रहिबा दरकार. तापरे कहूची ruggedness and stout behavior under high temperature, माने high temperature रे से material टा केते strong रहिबो, ओके केते hard रहिबो, that is also required for a good scintillator for application such as your oil exploration. Okay, शेष point रे it should have short time of rise and recovery along with the large life of usage. Okay, so this is all about your scintillation counter. Okay, Thank you.